Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करूची जदि भल लागिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाया पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें प्रोबेबिलिटी विषय रे पढिबा यार आज फर्स्ट पार्ट देखिबा देखो ऑलरेडी तमे प्रोबेबिलिटी विषय रे प्लस टू रे पढ़ीच प्रोबेबिलिटी कहले बेसिकली आमे बुझीबा प्रेडिक्शन को ओके सो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स जोटा कि यार ब्रीफ डिस्कशन देछि ओके बा शॉर्ट हिस्ट्री मु डायरेक्ट जाउची एठी किछटा टर्मिनोलॉजी ऊपर ओके सो टर्मिनोलॉजी कौन गोटे है क्लासिकल अप्रोच गोटे एम्पिरिकल अप्रोच जोटा हूँ स्टैटिस्टिकल आ गोटे है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ओके सो सपोज ये प्रोबेबिलिटी आसची केमती गोटे तुम सपोज रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूछ ओके सो ये जो एक्सपेरिमेंट रे रिजल्ट को लेकिन आम प्रोबेबिलिटी डिसाइड करि परिबा दुईटा जिनस एथिरो आसीबो जो आउटकम ओके गोटे है ट्रायल आ गोटे है इवेंट ओके सो परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट या कहबा हमें ट्रायल आ जो आउटकम बा कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम जोटा बाहर ताको हमें कहबा इवेंट्स ओके एग्जांपल जदि तुम गोटे कॉइन को टॉस करूछ कॉइन माने जानिछो गोटे पटरे हेड थिबो आ गोटे पटरे टेल थिबो सो टॉस कले आइदर हेड पड़िबो किंबा टेल पड़िबो सो 50-50 चांसेस सिमिलरली जदि तुम गोटे डाए ओके जोटा तुम लूडो रे यूज करो ताकू पकाउछ छटा फेस अच्छी छटा फेस रे 1 2 3 4 5 6 ए बढिया लिखा है सो जे कौन सी गोटे नंबर ही ऊपर को देखा जीवो ओके एंड ऑल दीज आउटकम्स आर एक्चुअली सिमिलर ओके सो जे कौन सी नंबर आसी पारे सिमिलरली हमें आउ भी याकू एग्जांपल रे बुझी परिबा ओके अच्छा तापरे एबे आसीबा एग्जॉस्टिव केसेस माने कोन देखो टोटल जे कोनसी गोटे तमे रैंडम एक्सपेरिमेंट करूछो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ताकू हमें कहबा एग्जॉस्टिव केसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट सपोज फॉर एग्जांपल गोटे टॉस करूछो गोटे सिंगल कॉइन को ताले आइदर हेड आसीबो किंबा टेल आसीबो सो एठी एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस केते हैला 2 ओके हेड बा टेल जदि दुईटा कॉइन टॉस करूछ ताहले पॉसिबिलिटी अछि कोन एमती ही पारे हेड हेड बा हेड टेल बा टेल हेड और टेल टेल ओके सो एठी एच टी जेमती कहली इट मीन्स हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन द सेकंड कॉइन ओके सो एबे एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस केते ही गला 4 जाकू कि हमें 2 टू द पावर 2 माने 2 स्क्वायर लिखि परिबा ओके सिमिलरली लूडो रो जदि तमे एबे डाए को जदि पकाउछ दुई थर ओके गोटे डाए को दुई थर पकाओ किंबा दुईटा डाए को एका संगे रे पकाओ ताले वी विल हैव एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस 36 व्हिच इज 6 टू द पावर 2 दैट इज 6 स्क्वायर जदि तीनटा पकेबो ताले 6 रो क्यूब दैट इज 216 ओके सो ए हिसाब रे गोटे नंबर आमे लिखि परिबा जोटा कि कॉम्बिनेशन वे रे एनसीआर या विषय रे डिटेल आमे आपको देखिबा ओके सो एनसीआर नंबर ऑफ वेज रे आमे एग्जॉस्टिव नंबर केसेस को आनी परिबा तापरे आछी फेवरेबल केसेस और इवेंट्स देखो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस माने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ओके जाको आमे सैंपल स्पेस मध्ये कहि थाउ फेवरेबल केसेस माने जो थरो गोटे एग्जांपल रे तुम गोटे प्रॉब्लम पचारची आ सेही फेवरेबल केसेस को ही डिस्कस करो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस
Okay, so number of outcomes of a random experiment which entail or result in the happening of an event are termed as the cases which is favorable to that event. Okay, suppose गोटे टॉस पकाउछ दुईटा कॉइन रो number of cases favorable to the event exactly one head केवल गोटे हेड आसीबो ताले हेड टेल हे पारे किंबा टेल हेड हे पारे ओके जदि टू हेड कहुछ ताले हेड हेड हे पारे ओके सो एई भलिया हमें फेवरेबल केसेस को नै परिबा तापरे आछि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने बाद देबा को हमें कहू ओके सो two or more events are said to be mutually exclusive if the happening of any one of them excludes the happening of the other okay माने जदि गोटे कॉइन को टॉस करूछ ताले जदि हेड पडुची ता माने टेल पडिबो नाही बुझिला सो हेड बा टेल पडिबा होची म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओके सिमिलरली जदि तुमे गोटे डाई को थ्रो करूछ जे कोनसी गोटे नंबर आसीबो 1 रु 6 भितरे ताले आउ किछि भी बाकी नंबर आसीबो नाही दैट मीन्स एटा को भी हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहि परिबा okay then we have equally likely cases the outcomes are said to be equally likely or equally probable okay if none of them is expected to occur in preference to the other माने जदि गोटे कॉइन बा डाइस को तमे जदि पकाउछ all the outcomes हला से हेड टेल हो बा जो छोटा हमर आउटकम डाई रे थिला 1 रु 6 भितरे दे आर इक्वली लाइकली जे कोनोसी भी नंबर आसी पारे बा जे कोनोसी हेड भी आसी पारे टेल भी आसी पारे एमती नुह जे कि गोटे रो आसीबार परसेंटेज बेसी आ गोटे रो कम ओके ताले सेटा को हमें कहि परिबा जे पार्शियल हे गला नो we should have impartiality of that experiment okay then we have independent events को independent केते बेले कहिबा if happening of any one event is not affected by and does not affect the happening of any one of the others माने जदि गोटे तमे सपोज डाई को टॉस करूछ repeatedly the event of getting 5 in the first throw is independent of getting 5 in the second third and subsequent throw ता संगे किछि यार लेना देना नहीं तेणु ए भलिया केस को हमें कहिबा इंडिपेंडेंट इवेंट्स तापरे आछि मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज जोटा कि एक्चुअली डील करूची सेट थ्योरी ऊपर ऑलरेडी तुम एटा प्लस 2 रे पढिछो सो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड द डिटेल्स सेट थ्योरी ओके जेमति कि तेरा सिंबल कहि रखुची लाइक एठी देखो दिस इज द बिलोंग्स टू दिस इज डज नॉट बिलोंग टू दिस इज कंटेन्ड इन याकू सबसेट भी कहो तमे दिस इज कंटेन्स याकू सुपरसेट भाई मध्य यूज करा जाय ओके सो यार एग्जांपल दे कि ये बुझौची देन वी हैव नल सेट माने किछि भी एलिमेंट्स ए सेट रे नथिबो जेमति सबसेट ऑलरेडी जानिचो इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स ओके सो ए सब बेसिक टर्म्स गुडा अछि देन वी हैव द यूनिवर्सल सेट आ तापरे सेट रो एल्जेब्रा माने मेन तमरो होउची दुईटा जिंस गोटे हला यूनियन गोटे हला इंटरसेक्शन ओके अच्छा सो या भीतर को मु डिटेल अगेन कहबी मु जाउनी देन वी हैव सम कॉम्प्लीमेंटरी सेट ओके कॉम्प्लीमेंटरी सेट को हमें एक्चुअली assign kariba like a bar or a to the power c okay then we have the difference between two sets like this okay so laws of set theory या विषय रे भी तमे पढिछ ऑलरेडी प्लस 2 रे ओके दीज आर सम ऑफ द लॉज अब जदि हमें तीनटा सेट नबा हिसाब रे लॉ को बाहर करि परिबा ओके डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटिव देन डिफरेंस लॉज कॉम्प्लीमेंटरी लॉज आ गुटे अछि डी मॉर्गन्स लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन दिस वन ओके सो यूनियन माने देखो ए बडा फिगर तमे ऑलरेडी प्लस 2 रे पढितबो ए गोटे सेट बी गोटे सेट दिस इज द यूनियन रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द इंटरसेक्शन रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द टू सेट्स ओके तापरे डिसजॉइंट सेट जदि दुई सेट भितरे किछि भी कॉमन एलिमेंट नाही ओके आ एस हेगला यार बाहर यूनिवर्सल बस सुपर सेट तापरे कॉम्प्लीमेंटरी जदि एठी ए सेट ताले कॉम्प्लीमेंटरी हेगला ए बार और ए टू द पावर सी ओके अच्छा तो ये हिसाब रे सेट थ्योरी तमे निजे पढ़ी परिबो ओके यू कैन रीड इट आउट मेन एबे आसीबा आ गुटे जो इंपोर्टेंट जिंस हला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन
ओके फास्ट देखिबा परमुटेशन माने कोन डेफिनेशन कहूची परमुटेशन ऑफ n different objects taken r at a time is denoted by npr. Okay, and it is an ordered argument of only r objects of n objects. Okay, মানে यार प्रूफ को जीवानी फर्स्ट थियोरम टा देखो এটা হচ্ছে number of different permutation of n different objects taken r at a time মেন হেলা এই যে ওয়ার্ডটা উইদাউট রিপিটেশন ওকে উইদাউট রিপিটেশন যদি কହୁছি তাহলে npr র ভ্যালু আসছে n into n minus 1 into n minus 2 so on up to n minus r plus 1 এই লাস্ট টার্ম जो n minus r plus 1 को আমি লিখি পারিবা n minus যদি এটি স্কয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে দেলি r minus 1 okay square bracket closed okay so এই npr জানিলা যদি npn ଅଛି তাহলে ইয়ার ভ্যালু n into n minus 1 into n minus 2 up to 1 যায় ଯିବ that means npn is nothing but n factorial okay so এটা আসিলা without repetition रे ଆଉ npr को ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ এই হিসাବରେ লিখি परिबा it is also equal to n factorial divided by n minus r factorial ତେବେ যদি with repetition ଅଛି permutation ହେଇଯିବ ଏବେ ଟିକେ change npr ହେଇଯିବ n to the power r ଆଉ npn ହେଇଯିବ n to the power n okay আচ্ছা তারপরে permutation of objects which are not all distinct তাহলে এই হিসাବରେ আসিব okay then fundamental rule for counting then we have another theorem okay তারপরে আসছে combination definition কোন combination of n different objects taken r at a time denoted by ncr or याको ब्रैकेट रे nr এই হিসাবে লিখি পারিবা এই যে selection of only r objects out of n objects without any regard of arrangement okay so theorem रो जहाँ भी यार वैल्यू आछी देखो ncr is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial such that r should be less than or equal to n r cannot be greater than n okay so এটি ইয়াকু আমি npr divided by r factorial भी लिखि परिबा permutation combination एटा भी तमरो +2 रे थिला okay so different theorems are there regarding the permutation then we have the combination binomial coefficient रे भी अछि एबे जोटा मेन टॉपिक रो हमरा आछि मैथमेटिकल और क्लासिकल जाकु कि a priori probability कहा जाय ओके सो यार डेफिनेशन कोन जदि गोटे रैंडम एक्सपेरिमेंट नउचो आ एटा रु रिजल्ट बाहरुची कैपिटल N exhaustive mutually exclusive and equally likely outcomes that is cases out of which suppose small m हेगला favorable one okay for particular event a then probability of occurrence of this event a याकू आमी usually denote करिबा pa which is equal to m by n okay ताले एबे यार जदि आमे कॉम्प्लीमेंटरी बार करबा a बार ताले किछि नै सिंपली याकू लिखिबा pa बार which is 1 minus m by n or 1 minus pa such that pa plus pa bar equal to 1 that is 1 is nothing but 100% so आमे देखिया को पाउछु जे प्रोबेबिलिटी रो वैल्यू टा रहउची 0 रु 1 भितरे माने 0% रु 100% भितरे ही यार रेंज रहउची ओके probability suppose जदि हमें 0 कहला that means the event a is not possible याको हमें null event कहबा और जदि pa equal to 1 हेगला ताले a is called a certain event there is no uncertainty okay इछि भी आव एथरे uncertainty रहिबो नाही okay अच्छा आकु पढिबा एबे there are some limitations also here for the classical approach then we have the statistical or empirical approach एथिरे कोन हबो डेफिनेशन कहउची जे जदि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करिबा हमें रिपीटेडली अंडर एसेंशियल होमोजेनस एंड आइडेंटिकल कंडीशन देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो जोटा m by n करथला याकू बहुत बड़ा नंबर ऑफ टाइम्स कला ओके सो हियर द ट्रायल्स बिकम इनफाइनाइटली लार्ज ताले एबे हमें स्टैटिस्टिकल को या अप्रोच करिबा जदि प्रोबेबिलिटी लिखि परिबा लिमिट एज कैपिटल N टेंड्स टू इंफिनिटी m by n ओके सो एटा आछि
एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी यार भी लिमिटेशंस अच्छी ओके तापरे हमर जोटा मेन एग्जांपल सॉल्व करबा ओके जोटा तमरो क्वेश्चंस आसीबो परीक्षा रे फर्स्ट एग्जांपल कहूची गोटे यूनिफॉर्म डाई थ्रो हला ओके randomly find the probability that the number on it is 5 फर्स्ट दोची तापरे ग्रेटर देन 4 तापरे इवन दोची ओके फर्स्ट कथा देखिबा डाए रे तुम जानिछ सब जते फेस अछि 6टा फेस रे 6टा नंबर लिखा है 1 रु 6 पर्यंत एंड ऑल दीज आर exhausted number ओके सो टोटल हेगला exhausted number of cases 6 तो थरे पडुची गोटे डाए ओके आ जदि सेथिरु आमे कहबा जे 5 आसुची ताले फेवरेबल केस हेगला केते ओनली 1 ओके तेणु करी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एबे केते हेबो फेवरेबल डिवाइडेड बाय exhaustive दैट इज 1/6 तापरे सेकंड ग्रेटर देन 4 कहूची ग्रेटर देन 4 माने हम बुझिबा केते 5 आउ 6 सो एबे फेवरेबल केसेस केते हला 5 आउ 6 माने 2 ओके दुईटा केस हेगला सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/6 दैट इज 1/3 देन इवन 3 नंबर रे कहूची इवन माने 2 4 6 टोटल हेगला तीनटा फेवरेबल केसेस सो 3/6 दैट इज 1/2 ओके सो वेरी इजीली तुम यार वैल्यू पाई गलो ओके तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम कहूची इन ए सिंगल थ्रो with two uniform dice find probability of throwing 5 and 8 ओके एबे दुईटा डाइस को थ्रो करिवार अछि तेनु exhaustive number of cases हमें देखिथिला 6 रो स्क्वायर दैट इज 36 एबे एठी throwing 5 कहले माने यार समेशन दुईटा जाकर जो डायर जहा नंबर आसीबो तार समेशन टा 5 हेबा कथा फर्स्ट पॉइंट ओके सेकंड को तापरे जिबा सो एई केस रे हमरो जो फेवरेबल केस हमें केमती तैयारी करि परिबा इट कैन बी 1 4 4 1 2 3 एंड 3 2 या छोड़ा किछि भी हेई परिबोनी सो टोटल चारिटा केस आसी गला जोटा फेवरेबल होची सो प्रोबेबिलिटी केते हेबो 4/36 दैट इज 1/9 तापरे सेकंड कहूची 8 हेबा कथा 8 हेबा पई हमरो केस हेई पारे फेवरेबल 2 6 6 2 बिकॉज़ एटा अल्टरनेट हेई पारे तापरे 3 5 5 3 एंड 4 4 4 4 आ अल्टरनेट हेई परिबो नाही बिकॉज़ समान अछि राइट तेनु टोटल पांचटा डिस्टिंक्ट केस हमें पाइला व्हिच आर फेवरेबल सो 5/36 हेगला हमरो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट नंबर एटी एबे कार्ड प्लेइंग कार्ड्स रो कथा आछि ओके ऑलरेडी तुम जानिछो प्लेइंग कार्ड रे टोटल जोकर को छाडी 52 कार्ड्स थाए ओके चारिटा अलगा अलगा तारो फॉर्मेट रछि ओके सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कहूची दे आर अ किंग a queen, a jack, an ace. Okay, then कहूची two are kings and two are aces. Then all are diamonds. Then two are red and two are black. Then there is one card of each suit. Suit माने जेमति कहली चारि प्रकार अछि. तापरे लास्ट कहूची there are two cards of clubs and two cards of diamonds. ओके सो एठी छटा अलग अलग जिनस हमको पचारुची राइट तेणु हमर फर्स्ट हला से कहूची जे चारिटा कार्ड ड्रॉ करा जाऊ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स ए जगह रे हमको यूज करबा को पड़िबो कॉम्बिनेशन ओके कॉम्बिनेशन माने 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन 52 C4 वेज ओके सो एटा हमको दबो exhaustive number ओके सो exhaustive number हे गला केते दिस तापरे फर्स्ट पॉइंट को जिवा फर्स्ट पॉइंट कोन कहूची देयर आर अ किंग क्वीन जैक एस ओके सो टोटल किंग केतरा थाए चारिटा सो चारिटा किंग जो भितरु गोटे किंग आसीबो केमती 4C1 दैट इज 4 वेज सिमिलरली क्वीन जैक आउ एस एटा भी चारटा अछि सो 4C1 अगेन 4 वेज एमानकर भी हबो सो सिंस एनी वन of the ways of drawing a king can be associated with any one of the ways of drawing a queen jack and ace तेणु फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ही जबो केते हमको ए सब को मल्टीप्लाई करबा को पड़िबो
तेणु रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी केते हबो ए मल्टीप्लिकेशन व्हिच इज द फेवरेबल वन डिवाइडेड बाय द एक्जॉस्टिव ओके दिस विल बी द रिजल्ट ओके तापर सेकंड पॉइंट रे से कहूची 2 आर किंग्स एंड 2 आर एसेस ओके एटा भी इजीली बाहरी जिवो दुईटा किंग आ दुईटा एस को आमे ए हिसाब रे बाहर करि परिबा 4c2 वेज रे ओके डिवाइडेड बाय एटा दुईटा मल्टीप्लाई हला किंग आ एस पाई डिवाइडेड बाय द एक्जॉस्टिव वन ओके 3 नंबर कहूची ऑल आर डायमंड्स चारिटा कार्ड आमे टोटल डायमंड केते थाए 13 टा थाए तो चारिटा कार्ड आमे 13 टा डायमंड रु बाहर करि परिबा दैट इज 13c4 वेज एटा होची फेवरेबल वन डिवाइडेड बाय द एक्जॉस्टिव सिमिलरली बाकी नंबर को भी तुम इजीली सॉल्व करि परिबो ओके एटा भी तमरो प्लस 2 रे थिला ओके सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू बिकॉज प्लस 2 रु बहुत गुडाए ए जगह रे सिमिलरिटी अछि देन नेक्स्ट आमे आकु बढ़िबा ओके केतरा नंबर मु स्किप कर दोउची देखो एटा गोटे इंटरेस्टिंग नंबर एठी कहूची इफ 6 dice are rolled then the probability that also different faces is what ओके 6टा डाय को तमे रोल करिवो ताले एक्जॉस्टिव नंबर केते हेबो 6 to the power 6 ओके सो एटा हला एक्जॉस्टिव नंबर तापर जदि हमें डिफाइन करिबा जे सपोज गोटे इवेंट हला ई फॉर इवेंट दैट ऑल द 6 डायज सो डिफरेंट फेसेस ओके डिफरेंट फेसेस जदि 6टा जाको डायरे आसिला निहाती भाबरे आमे कहि परिबा जे सबु फेस रे संख्या अलग अलग अछि सो 1 2 3 4 5 6 हेतिबो ओके now we can get one of the 6 faces that is from 1 to 6 on the first dice okay for happening of this event जाको कि हमें assign करिचु e the second die must show any one of the remaining 5 faces similarly third die pai ebe only remaining 4 faces and so on hence by the principle of counting the number of cases which are favorable for happening of this event e kono habo favorable cases 6 into 5 into 4 into 3 into 1 that is simply 6 factorial so our probability kete habo 6 factorial divided by 6 to the power 6 this one okay so this option 3 is the correct answer then next problem re kochi find the probability that in 5 tossing 5 thoro toss kora jibo then a perfect coin turns up head at least 3 times in succession okay कम से कम 3 थर हेई परिबो succession रे okay that means ए जो वर्ड गोटे लागि छि at least कम से कम 3 थर माने हेड आसीबो कहूची ये ओके सो ए सक्सेशन टा स्टार्टिंग रे ही पारे मझी रे ही पारे बा एंडिंग रे ही पारे ओके बिकॉज 5टा कॉइन को टॉस करिबा जहा गोटे कॉइन को 5 थर टॉस करिबा मध्ये सिया ओके तापरे एटलीस्ट जो वर्ड टा कहितली माने 3 भी ही पारे 4 भी ही पारे किंबा 5 भी ही पारे ओके सपोज हमें फर्स्ट टॉस कला फर्स्ट टॉस रे सपोज हेड 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 3टा आसी गला ओके एटा सक्सेशन रे आछि ता परटा सपोज हमें सेट करछु टेल हेड then tail then head head okay so एटा गोटे सेट हमें पाउछु ताबरे सेकंड टॉस करिबा सेकंड टॉस रे एबे तो हेड को आरंभ रे नै परिबा नाही ताले हमें कोन करिबा याकू मझी रे नेबा को ट्राई करिबा ओके टेल लास्ट आडे रहिले ओके ताबरे टेल एटी रहू लास्ट रे हेड रहू या भी गोटे पॉसिबिलिटी हेई परिबो स्टार्टिंग रे तो हमें हेड ऑलरेडी नै सारिछु डबल रिपीटेशन करि हबो नाही तापरे थर्ड टॉस रे एमती भी आसी पारे एबे हेड को हमें लास्ट रे रखू सो टेल हेड बा हेड तेणु टोटल एबे केतेटा केस आसी गला आमे देखिया को पाउछु टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड्स इज नथिंग बट 8 okay so required probability 8 divided by 32 काहे की because 2 to the power 5 okay head किंबा tail पड़िबो so 2 अब 5 थर पडुची so 2 to the power 5 that is 32 so it is 1 by 4 that is 0.25 or 25% is the probability okay तापरे next problem एठी
कौच जे गोटे बैग रे 20टा टिकेट अच्छी which are marked with numbers 1 to 20. One ticket is drawn at random. Find the probability that it will be a multiple of 2 or 5. तापर सेकंड कौच 3 or 5. ओके देख गोटे टिकेट आमको बाहर करिवार अछि केते भितरु 20 टिकेट भितरु ताले कॉम्बिनेशन आसीगला 20C1 दैट इज 20 वेज रे याको हमें बाहर करि परिबा एटा हला एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस देन फर्स्ट पार्ट को आसीबा मल्टीपल हेतिबो 2 किबा 5 रो ताले फर्स्ट हमें 2 रो मल्टीपल देखिबा केस कोन हे पारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 टोटल 10 टा केस तापर मल्टीपल ऑफ 5 देखिबा 5 10 15 20 एमती आसिक 4 केसेस है देख मझे ये कौन लगे और लगे और जदि लगे देला दैट मीन्स ये दुईटा जाक को जोग कर दूची ओके एंड लगे देले माने एटा कॉमन हो गला और टा होची यूनियन एंड हला इंटरसेक्शन ओके सो एबे आमे कोन करबा ऑफ दिस टू केसेस दैट इज 10 and 20 are duplicated कहीं बिकॉज देख 10 एठी भी अच्छी आउ एठी भी अच्छी 10 20 हेंस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट केस हमको नेबार अच्छी फेवरेबल इवेंट पाई ओके सो केते हेबो ए जो हमें देखुतला 10 केसेस 4 केसेस जोगो कर देला तापरे काटी देबा केते -2 बिकॉज 10 20 दुई दुई थर अच्छी ओके तेणु आसीगला 12 तापरे प्रोबेबिलिटी इजीली बाहरी जीवो 12 by 20 that is 3 by 5 or 0.6 that is 60%. सेकंड केस को 3 और 5 एटा भी सही बलिया हमें बाहर करी परिबा ओके देन मूविंग ऑन एटा गोटे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम प्राय एग्जाम रे एमती प्रॉब्लम आसे एन अर्न कंटेन्स 8 white and 3 red balls if 2 balls are drawn at random find the probability that both are white both are red one is of each color माने गोटे रेड हेतिबो गोटे व्हाइट हेतिबो ओके सो एठी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स केते अछि 8 टा व्हाइट अछि 3 टा रेड अछि टोटल हेगला 11 ना दुईटा बॉल हमको बाहर करिवार अछि फ्रॉम 11 बॉल्स तेणु कॉम्बिनेशन हैला 11C2 दैट इज 55 ओके तापर फर्स्ट पार्ट को आसीबा बोथ विल बी व्हाइट मींस we have to draw 2 white balls right out of 8 white balls that is can be drawn in a combination 8C2 which is 28 so probability kete hela 28 by 55 similarly red pai jodi duita jako red hebo tale 2 red can be drawn from 3 red in 3C2 that is 3 tale 3 by 55 आ जदि गोटे रेड आ गोटे व्हाइट हला ताले ए दुईटा को हमको मल्टीप्लाई करबा को पड़िबो okay one red from 8 and one white from 3 that is 8C1 into 3C1 hegala 24 so 24 by 55 is the required probability right तापरे नेक्स्ट एबे देखो ए प्रॉब्लम को आसो गोटे लेटर आमे देखिबा वर्ड रे वर्ड टा होची फेल्युअर ओके फेल्युअर सो एथिरे से कहूची लेटर गुडा को एम्ति आमे अरेंज करबा रैंडमली जे हमें प्रोबेबिलिटी बाहर करिबा दैट द कॉन्सोनेंट्स मे ऑक्युपाई ओनली द ऑड पोजीशंस ओके सो ए जो फेल्युअर ए वर्ड रे प्रथम कथा देखो जति की वर्ड अछि टोटल केते 7 जति की लेटर्स अछि सॉरी टोटल 7 and all these are distinct okay so they can be arranged among themselves in 7 factorial which so এটা হলো exhaustive বা total number of cases तापरे एई वर्ड फेल्युअर रे टोटल भावेल संख्या केते 4 that is a I u e then टोटल कॉन्सोनेंट संख्या केते 3 that is f l r okay so एई तीनटा कॉन्सोनेंट को हमें ए हिसाब रे प्लेस करिबा इन द 4 odd places हमको जोटा कहूची okay it will occupy only the odd positions or places okay so कोन ही जिवो odd places हाफटा जेतु अछि घर सो हमर odd place हला 1 3 5 and 7 okay so this can be done in 4C3 ways okay and further these three consonants
can be arranged among themselves ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବି interchange ହେଇପାରିବେ କେତେ ୱେରେ 3 factorial ୱେରେ ତାପରେ ବାକି ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଲା ଚାରିଟା ଭାୱେଲ ସେମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ interchange ହେଇପାରିବେ in 4 factorial ways okay so ଏବେ favorable cases କେତେ ହେଲା 4c3 into 3 factorial into 4 factorial this divided by 7 factorial which is 4 by 55 the required answer okay तापरे next problem कौची 20 books are placed at random in a shelf find the probability that a particular pair of books shall be number 1 always together then number 2 never together okay प्रथम कथा 20 टा बही जो अछि randomly आमे shelf रे रखिजु ताले याकू 20 factorial ways रे रखि हबो एटा हेगला exhaustive number of cases ओके तापर फर्स्ट पॉइंट कहूची जे आमे कोन करिबा गोटे पेयर को सब बेले से माने एका संगे थिबे एई जिंसटा देखिबा सो लेट अस नाउ रिगार्ड दैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर टैग्ड टुगेदर माने याकू गोटे बोली आमे धरिबा सो दैट वी शैल रिगार्ड देम एज अ सिंगल बुक thus we have now 20 minus 1 that is 19 books which can be arranged among themselves in 19 factorial ways but ebe point hela the two books which are fastened together semane ebe nijo bhitere interchange hei paribe kete way re 2 factorial ways re right tale ame ebe pai gala favorable number of cases kemti hebo number of favorable cases is 19 factorial into 2 factorial so required probability hegala this divided by 20 factorial so 1 by 10 second jinso जोटा कहिछि जे they are never together okay जे कोनसी गोटे पेयर अगेन हमर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 20 बुक पई तो आसी जाउची 20 factorial तापरे total number of arrangements that a particular pair of books will always be together eta भी पाई जाइथिला हमें 19 factorial into 2 factorial okay जोटा पार्ट 1 रे पाइला ताले एबे माइनस करिबा 20 factorial minus this much ताले टोटल आसी गला एतिकी okay so required probability देखो this divided by this याको हमें alternatively आउट इजी वे रे भी करि परिबा केमति करिबा हमें कोन करिबा probability नहीं जबा a particular pair of books shall never be together हेगला हमरो probability okay never be together ताले एबे याको हमें लिखि परिबा 1 minus p a particular pair of book is always together okay that is 1 minus 1 by 10 so it is again equal to 9 by 10 which is giving you the same result okay तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम एटा देखो एथिरे न्यूमेरिकल टाइप तो किछि नै प्राय कांसेप्ट अछि ओके यू कैन रीड इट आउट ए दुईटा नंबर हला आकु आमे एटा गुटे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखिबा एठी कहूछि इफ 10 men among whom दुईटा लोक हे गेले a और b they stand in a row then what is the probability that there will be exactly 3 men among a and b okay so 10 टा लोक अछंती in a row then a can occupy any of the 10 positions similarly b can occupy any one of the remaining 9 positions okay hence the exhaustive number of cases for the position को first हमें locate करिबा okay of the two men that is a and b are 10 into 9 that is equal to 90 okay এটা आसीगला total exhaustive number of cases then favorable एबे बाहर करिबा the cases कोन favorable कहूची a और b मझी रे तीन जन रहिबे okay so cases favorable to the event that there are exactly 3 men between a and b are given like this first हला a is in the first position ताले b को जाय रहबो fifth position रे okay एटा गुटे हे पारे चांस किंबा a जदी सेकंड रे अछि b सिक्स्थ रे अछि एंड सो ऑन एंटी कंडीशन चलला a सिक्स्थ रे अछि b 10th रे अछि ओके फर्दर a b निज जागा को इंटरचेंज भी करि परिबे ओके सो हमरो टोटल आसी गला केते फेवरेबल केसेस एटा तो आस्तिला 6 टा ओके 1 2 3 4 5 6
तापरे जेहेतु से इंटरचेंज करि पारुछन 2 into 6 ताले 12 आसीगला सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी केते 12 by 90 which is equal to 2 by 15 ओके तापरे एई प्रॉब्लम देखो वर्ड कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमें एई बढिया प्रॉब्लम करि सरछु आई कैन बी श्योर दैट यू कैन डू दिस ओके एठी भी मैथमेटिक्स ऊपर थिला असैसिनेशन ओके तापरे कमिंग टू some interesting problem okay this one एबे देखो एठी कहूची हमको डिजिट दे देला पांचटा 0 1 2 3 4 ये कहूची a 5 digit figure or number is to be formed by using this 5 digits without repetition हेबार नाही find the probability that the number formed is divisible by 4 एबे याको टिके भलसे बुझिबा आमर जो पांचटा डिजिट होची 0 1 2 3 4 सो याको आम अरेंज करि परिबा निज निज भितर केते वे रे 5 फैक्टोरियल वे रे आउट ऑफ दिस मन रख 0 जदि फर्स्ट पोजीशन रे आसी जाउची ताले एटा 5 डिजिट नंबर करिवो नाही एटा केवल 4 डिजिट नंबर करिवो तेनु ए केस को हमकु काटिबा को पड़िबो ओके 0 जदि फर्स्ट रही जाउची ताले रेस्ट चारिटा नंबर समान को भितर अरेंजमेंट रहउची 4 फैक्टोरियल सो आमर आसीगला एबे केते 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 96 ओके तापरे the number formed will be divisible by 4 कहूची if the number formed by the two digits are extreme right माने the digits in the unit and tens places माने तमरो एकक आ दशक संख्या ओके सेटा हमको देखिबार अछि माने एठी हमें एई भलिया केस नै पारू 0 4 एटा 4 रे हमें डिवाइड करि परछु 1 2 एटा डिवाइड करि परछु 20 24 32 40 माने एई सब नंबर 4 रे डिविजिबल ओके एटा होची एकक आ दशक संख्या माने या पूर्वरु आ तीनटा नंबर थिबो ओके सो इफ द नंबर्स एंड विथ 0 4 ताले जो बाकी तीनटा रहिला केते 1 2 3 सेमान निज भितरे इंटरचेंज हे परिबे in 3 factorial ways similarly the number of arrangements of the numbers ending with 20 40 okay 20 और 40 पाई भी से बळे आसीबो 3 factorial okay तापरे जदि हमें देखिबा if the numbers end with 12 जदि आसी जाउची काई कि एमती कला हमें बिकॉज़ 0 4 20 और 40 रे 0 अछि किंतु 12 24 और 32 रे 0 नाही ओके सो फर्स्ट हमें देखिबा 12 जदि नउछु ताले रिमेनिंग 3 डिजिट्स होची केते 0 2 3 जदिओ से माने 3 फैक्टोरियल वेज रे इंटरचेंज हे परिबे किंतु हमको काटिबा को पड़िबो 0 रे फर्स्ट प्लेस रे रही परिबो नाही ओके सो we have to reject the cases which start with 0 okay so आसीगला केते 3 minus 1 factorial that is 2 factorial okay ए बडा केस पारो पय आसीगला केते 3 factorial minus this 2 factorial so 4 similarly the number of 5 digit ending with 24 और 32 एटा भी आसी जीवो 4 4 तेनु total number of favorable cases केते हला एठी हमर हे जाउची 3 फैक्टोरियल जोटा तीनटा आस्तला सो 3 into 3 फैक्टोरियल तापरे 4 हमर तीनटा आसीला 3 into 4 सो आसीगला 18 plus 12 that is 30 30 एटा आछि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बाहर करियो केमती फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव हम पाइथिला 96 ओके 96 केमती पाइला ऑलरेडी ऊपर देखो 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल करिके हमें 96 पाइ सेटु एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ cases okay so I hope you can solve all these probability numbers eta भी गोटे number अछि you can solve it I hope so this is all about the probability यार हमें first part आज पढ़ला thank you